Hello friends, today we are going to discuss 9 regions of abdomen. So let us get started. For the purpose of describing the location of different organs, anatomists divide the abdomen into 9 regions by 4 imaginary lines. तो ये सारा जो है, this whole portion, this is abdomen, this is diaphragm, this is here abdomen, and this greenish one is inguinal ligament. This is this one and this one, anterior superior iliac spine, and here we have, these are the legs. This is the symphysis, pubis, or pubic symphysis. This is anterior superior iliac spine. For the purpose of describing the location of different organs, we have got 4 imaginary lines. 2 हॉरिजेंटल है और 2 जो है वर्टिकल है और लेटरल है. फर्स्टली जो हम डिस्क्राइब करेंगे, जिस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, वो है ट्रांसपाइलोरिक. कौन सी लाइन? ट्रांसपाइलोरिक. फर्स्टली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपाइलोरिक लाइन or plane. This is the costal margin. Two costal margins, and this transpyloric line is nothing but it is a horizontal line passing anteriorly from tip of 9th costal cartilage. This is 9th costal cartilage. Passes anteriorly from the tips of 9th costal cartilage. And posteriorly, this passes through the lower border of L1 vertebra. This is L1 vertebra, and along its lower border it passes posteriorly. This is plane called a transpyloric plane. Another plane we have that is called this one, that's called a transtubercular plane. What is this plane called? Tubercular plane. It passes through 2 tubercles of the anterior superior iliac spine. So this is an imaginary line which passes anteriorly through the tubercles, pubic tubercles. As you know that anterior superior iliac spine has tubercle, that's called the anterior tubercle, and this line passes through the tubercles of anterior superior iliac spine. That's iliac bone. That's called transtubercular plane. Now we have got 2 vertical planes. Yeah, posteriorly it passes through upper border of L5 vertebra.
upper border of L5 vertebra. This plane, that's called a transtubercular plane. Now we have got two more planes. They are called the lateral planes. As you can see, these are the two lateral planes. This is clavicle. Clavicle. And these planes pass through the midpoint of clavicle, that's midclavicular point, to mid-inguinal point. This is inguinal ligament and it passes from the midclavicular line to the mid-inguinal point. Now here question arises, what is mid-inguinal point? Mid-inguinal point is nothing but it is halfway between anterior superior iliac spine and pubic symphysis. Pubic symphysis और एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के हाफ में जो पॉइंट है उसी को हम बोलते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट, और यहीं से पास होता है हमारा ये लेटरल प्लेन. हमारे लेटरल प्लेन्स दो है, राइट लेटरल प्लेन और लेफ्ट लेटरल प्लेन. तो ये पास होते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट से. दूसरा एक पॉइंट होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. वो क्या होता है? वो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और यहाँ पे एक ट्यूबरकल होता है, प्यूबिक ट्यूबरकल, उसके बीच में जो पॉइंट होता है प्यूबिक ट्यूबरकल और एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के बीच में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. लेकिन हमारा कंसर्न है लेटरल प्लेन्स में मिड इंग्वाइनल पॉइंट, और ये राइट लेटरल प्लेन है और ये लेफ्ट लेटरल प्लेन है जो कि क्लैविकल से पास होके यहाँ पे मिड इंग्वाइनल पॉइंट को टच करता है. तो इस तरह से हमारे जो एब्डोमेन के रीजन्स है वो 9 बनते हैं. ये राइट साइड से है रीजन्स है और ये लेफ्ट साइड के रीजन्स है. अब हम इनकी नेमिंग करेंगे 1 बाय 1. तो चलिए करते हैं हम इनकी नेमिंग. तो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इसको बोलते हैं राइट लंबर, इसको बोलते हैं राइट इलियक फोसा. ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रियम. इसको बोलेंगे अम्बलाइकल, बीच में है अम्बलाइकल रीजन. ये वाला होता है हाइपोगैस्ट्रियम. अगेन अब लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट वाला है, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. ये वाला बनेगा लेफ्ट लंबर, ये राइट लंबर है, ये वाला बनेगा लेफ्ट लंबर. ये वाला बनेगा लेफ्ट इलियक फोसा. I hope that you have remembered this. Thanks.